Hello everyone, welcome to Beyond Marketing. This is Dr. Abdul Muheen. As we our previous lecture, we studied with various type of IPR and what was the different criteria for the date, such as uh, there were so many dates. Suppose as priority date, application date, publication date, issue date, priority date, so many dates. So lots of the confusion with that date. But each and everyone, what I know that if any person having knowledge about IPR, they are aware about that. Just it is a brush up thing, right? And then we will jump into our next lecture. That next lecture will be on type of patent application. So the brush up is about we studied various type of IPR. IPR, as we just studied that that is patent, trademark, patent, trademark, trade secret, industrial design, plant variety, copyright, geographical indication, and layout. As you aware about all those things and their timelines. Suppose you need to understand the 20-year lifetime and so on. You already studied that. If you wanted to visit it, you can visit to the previous lecture. The important point is that suppose usually lots of the confusion happening with respect to the date, different kind of the dates, the date. Suppose let's take an example here. We have an example, Rahul, right? Rahul just sleeping and that time he got an idea about an invention, and he thought that next day he started to make a prototype of that invention. When he prepared his prototype on 1st of February 2025, right? And on the after 1 month of making the prototype, he filed his patent application in India, right? 1st of March 2025, and after 1 year he got a publication of his patent application on 1st March 2026. After that, that patent application went into the examination and that patent got grant. Rahul was very happy with that, you know. And but he also, when he filed his patent application in India, 1st March 2025, same after the 1 month, he filed his patent application in US as well, 1st April 2025, right? So here you can see so many dates, right? First date is this one, next date is this one, another date is this one, and next date is this one. There are so many dates, if I talk about the patent application, right, of Rahul, then we can say what will be the priority date. Priority date will be that date where Rahul first filed his patent application. Where he filed his patent application, he filed first his application in India, right? So that the India's first filing application date will consider as priority date. So that the first part 2025 of Rahul patent application will consider as the priority date, application date, and filing date. In all those three dates will be the same for the Rahul here. And after that, when he got publication on his patent application, and he got publication date, and when all the examination and each and everything happened, then he got a grant. And what date he got a grant, that date is called issue date. When he took the same publication, same application in the US, right? Suppose Rahul filed his patent application in US, right? And he just done with each and everything. He just thought that I have a plan where I am going to commercialize my product. What idea I have, I can and earn money in US as well. So he is looking for a protection in US market. So he filed his patent application. After filing a patent application of 1 month, he filed his patent application. After 1 month, 1st March 2025, he filed his patent application in Indian Patent Office, and after 1 month, 1st April 2025, he filed his patent application in US. So what I would like to tell you here, there are so many dates, right? What you need to understand that in the patent, you need to tackle with so many dates and some other complex concepts. Some other complex concept just like a patent term extension and patent term adjustment, that we will learn later on. As of now, what we need to understand that some dates, right? Some dates, first is priority date, application date, filing date,
publication date, issue date, expiry date, right? Those kind of the date we must know about. How we have to understand where which date we need to consider as about what, right? Suppose in case of Rahul, we need to understand that for India patent, right? When we talking about the India patent, this priority date, filing date, application date, all the date will be the same for Indian patent application 1st March 2025, because that patent he filed first time, right? So that's why priority date, filing date, application date would be the same. When that patent got published, right? That when that patent got published, that time what the date will be, that date will be considered as a publication date. When all those prosecutions, examinations are done, and then the date is then Rahul's patent got grant. Rahul is very happy, and that date is called issue date. You know, and when he filed his patent application after 1 month, this date will not consider as priority date will be the this date, because first time he filed his patent application, and this date will be considered as the filing date or application date in the US. You know, and then this after filing 1st April 2025, it will get published. Whatever the time it will take depend upon the countries, right? And that patent will go in USPTO examination processes and got grant or expire, whatever the way. So let's come to here. In case of India, Rahul filed his patent application in India Patent Office, and he got the priority date. All those three dates would be the same, because first time he filed his patent application, right? First time he filed his patent application in 1st March 2025, the filing date, priority date, application date, all those dates will be same here, right? If if on the vice versa, if he started his filing of application in US, then all those three date will be same for US, right? Not for India, right? So then he got a publication. What date he got the publication? Some date, right? This is a random date I took that. Whatever the time it will take, as of course, usually publication of patent usually take 18 months, because lots of the rules coming up here, expedited publication is going on. We will learn each and everything in a more detail. Now just it is a random date, right? And after examination he got a grant, and that grant date is called issue date. And we believe that this is a routine patent application, so that patent will expire after 20 years, after 20 years from the first filing date. You know, first filing date, he the that patent will be expired, not from this date, from this date. Understood? And in case of the US, the priority date would be this one. Priority date would not consider this 1st April 2025. Priority date will consider, or this 1st April, sorry, priority date will not consider 1st April 2025. Priority date will consider 1st March 2025. And the application date would be when he first filed his application in US. That will, and any kind of, what kind of the time it will take to patent application got published, that will be considered publication date. And if it will go to examination, and this will be considered as, if we will got a grant, and then issue date. You know, so now we will come to various type of the application. Then now we will learn in our current lecture about various types of application. Suppose the application, you may be aware or not, I'm not sure about that, but we will learn in a very decent way with the practical examples. With that, continuation patent, continuation in part patent, divisional patent, ordinary patent, provisional patent, complete specification patent, international patent application, and national patent application, and some of the important terms which plays a very important role in case to, if you wanted to go further in the patent related field. So we will come to our lecture. Let's begin our lecture. In continuation to the last lecture, and so that we are going to learn about various type of patent application, you know, why we are going to study the various type kind of application. If you will work,
right? If you will start your work and then your client will come, or maybe your manager will come, okay, this is kind of the situation is happening with us, what is your suggestion, what you need to do we need to file for the divisional application, do we need to file for the provisional application? थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्ट नहीं है ये लेक्चर्स का, मेजर पर्पस है कि प्रैक्टिकल जब सिचुएशन आएंगी तो अब आप क्या रिकमेंडेशन करोगे, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी उस चीज़ों को प्रोसीड करने के लिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो आई विल ट्राई ईच एंड एवरीथिंग विद द एग्जाम्पल to explain you in that way, so that if any kind of the practical situation will come in front of you, so that you can deal those kind of the practical thing by yourself. Instead of just asking to manager, asking to someone else to do the things. Let's begin our lecture with the different kind of the patent application, when you need to file, or which kind of the patent application. Suppose provisional application. What is provisional? Sometime provisional application is also called as a temporary application, right? It is also called as a temporary application. Why it is called temporary application? Because in this, when you are going to file your provisional application, your invention, your experiment is still ongoing. It is not completed, it is under experimental situation, but you have some data, you need to file. You just feel that I need to take the priority, I need to take a priority, so that the other person cannot come with similar kind of the invention, or same kind of the invention, or maybe my his invention will consider as a art for my invention. So that's why the provisional application in India, as well as maybe the other country, here you have to file a temporary application. In that temporary application, you just have to file the descriptions and drawing of the invention. You don't have to write any particular thing in any particular way. यहाँ पे आपको कोई claim draft करने की जरूरत नहीं होती, कोई particular way draft. You just have to descriptions and drawings and other things. You can file it in the provisional application, and you will have a 12-month of window. Within 12-month of window, you need to file for the complete specification या ordinary application, right? वट इज प्रोविजनल एप्लीकेशन? सपोज है कि आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, राइट? आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, आपका क्लाइंट बोलता है यार मेरे पास इतना इतना डेटा हो गया है, इतना डेटा हो गया, एंड देन बट मुझे लगता है कि कोई और पर्सन मेरा जो है इन्वेंशन मेरे से पहले फाइल ना कर दे. तो अब आप सीधा सीधा उसे सजेस्ट करोगे कि आप एक काम करिए, आप प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए, सो दैट यू विल गेट अ प्रायोरिटी एंड यू विल हैव अ 12-month ऑफ विंडो, राइट? विद इन 12 month you can file for the complete specification. With that complete specification, you can have to file each and everything in a very detail, right? Come to the complete specification. Complete specification is also known as, right, complete specification is also known as this ordinary application. Why it is also called as ordinary application? Complete specification. In this complete specification, you have to file claims each and every element of the patent, and after filing of your complete specification, you cannot do any kind of the modification in the application, right? What difference is clear, right? Provisional application is a temporary application, but the complete specification or ordinary application is like a complete patent document, where you have to add each and everything in the claim and other things. In the provisional application, after filing a provisional application, you will get 12-month of window to file for the complete specification. But after filing a complete specification, you cannot do anything claiming or you cannot make add new subject matter in a routine situation. Come to the other one, divisional. अगर सपोज है कि आपका कोई क्लाइंट आता है, क्लाइंट बोलता है, या आप किसी कंपनी में काम करते हो, वो कंपनी का इन्वेंटर एक इन्वेंशन लेके आता है, वो बोलता है कि इस इन्वेंशन को आप फाइल कर दो. आपने उस इन्वेंशन को देखा, इन्वेंशन डिस्क्लोजर को देखा, आपने उसको बताया कि जो है इसमें मे बी चांसेस हो सकता है कि एग्जामिनर जो है डिविजनल के लिए आस्क करे, राइट? मे बी एग्जामिनर विल आस्क फॉर द डिविजनल. इन द डिविजनल पेटेंट एप्लीकेशन, इट इज अ टाइप ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन where examiner may ask you need to split your patent application into two parts. Maybe the one part as a main patent application, another part is a divisional application. So here you, what is the important parameter? What is the important parameter you need to take care of that? You need to take care of that. Suppose because invention जो है, invention objections क्यों आएगा? Objection because lack of the unity of the objection, right? ये आपको unity of the invention की वजह से जो है objection raise करेगा, क्योंकि
पेटेंट क्या बोलता है, एक पेटेंट एप्लीकेशन में एक ही इन्वेंशन जो है फाइल होगा, दो इन्वेंशन आप जो है एक पेटेंट एप्लीकेशन में फाइल नहीं कर सकते। अगर आप दो पेटेंट एप्लीकेशन में फाइल करोगे, ऐसी सिचुएशन पे यू नीड टू गो फॉर द डिविजनल एप्लीकेशन। एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, एक स्मार्टफोन है, राइट। सपोज है एक एक पेटेंट एप्लीकेशन है जहाँ पे जो है ए वन पेटेंट एप्लीकेशन क्लेमिंग अबाउट अ स्मार्टफोन कैमरा एंड स्मार्टफोन विद स्मार्टफोन कैमरा, दिस पेटेंट also comprises a new image processing system, two things, right? And then it went to the examination processes, and the controller or examiners thought this is a two different invention, and he will recommend you, he recommended that you need to file a camera system, right? A smartphone camera system as a main application, and the divisional application you can go for the image processing software. समझ में आया? डिविजनल पेटेंट एप्लीकेशन क्यों होता है? डिविजनल पेटेंट एप्लीकेशन जो है रेज इसलिए होता है अगर लैक ऑफ द यूनिटी होती है। लैक ऑफ द यूनिटी क्या है? लैक ऑफ द यूनिटी, एक पेटेंट एप्लीकेशन में केवल एक ही इन्वेंशन फाइल होगा, दो नहीं होंगे। अगर दो होंगे तो ऐसी सिचुएशन, इन दैट सिचुएशन एग्जामिनर विल रेज एन ऑब्जेक्शन, एंड इन दैट वे यू नीड टू फाइल अ डिविजनल पेटेंट एप्लीकेशन फॉर दैट एडिशनल इन्वेंशन अलॉन्ग विद दिस। क्लियर? कम टू द अनदर वन, कॉन्टिन्यूशन एप्लीकेशन क्या होता है? कॉन्टिन्यूशन एज अ टर्म इटसेल्फ स्टेट्स दैट कॉन्टिन्यूशन, राइट, कॉन्टिन्यूशन उसी के कॉन्टिन्यू में रहेगा। कॉन्टिन्यूशन पेटेंट एप्लीकेशन की कुछ कंडीशंस होती हैं। कुछ कंडीशंस क्या होती हैं क्यों कॉन्टिन्यूशन की? कोई भी जो है, इफ ही वांट्स टू ऐड, दो चार कंडीशंस होती हैं, जस्ट रीड दैट, राइट। इट इज़ अ पेटेंट एप्लीकेशन हु वांटेड टू परस्यू एडिशनल क्लेम। अगर आप कुछ एडिशनल क्लेम, बट इसमें एक कंडीशन ये है कि वो पेटेंट, दैट पेटेंट शुडेंट बी, दैट पेटेंट शुडेंट इशूड, एंड दैट पेटेंट शुडेंट अबेंडेंड, राइट। पहली कंडीशन। एंड दूसरी कंडीशंस जो है, दूसरी कंडीशन हमारी आती है कि उस पेटेंट का जो है अगर देखा जाए तो जो है प्रायोरिटी डेट जो होती है वो आपकी सेम रहेगी। और दीज पैरामीटर्स जो है एज आई ऑलरेडी मैंशनड इन सेपरेटली एज अ टिक मार्क। अब आते हैं कॉन्टिन्यूशन के बारे में क्या है। कॉन्टिन्यूशन पेटेंट की कुछ कंडीशंस है। कॉन्टिन्यूशन पेटेंट की पहली कंडीशंस होती है कि पेटेंट जो है ग्रांट नहीं होना चाहिए, एप्लीकेशन स्टेज पे होना चाहिए या एग्जामिनेशन स्टेज पे होनी चाहिए, अबेंड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या आता है, यहाँ पे अगर आपके पास जो है कॉन्टिन्यूशन एप्लीकेशन फाइल करते हो तो उसकी प्रायोरिटी डेट जो होगी वो सेम रहेगी। आप यहाँ पे कोई न्यू सब्जेक्ट मैटर ऐड नहीं कर सकते हो। आपको कुछ नया क्लेम आप लेके आ सकते हो। न्यू क्लेम कैन बी देयर। क्लेम जैसे कि आपका जो है ब्रॉड क्लेम है तो आप नैरो कर सकते हो, नैरो क्लेम है तो वो ब्रॉड कर सकते हो, राइट। इतनी ही चीज़ें हैं आप जो है कॉन्टिन्यूशन एप्लीकेशन फाइल करने में आप कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूशन एप्लीकेशन आप कब फाइल करोगे? कॉन्टिन्यूशन एप्लीकेशन आप व्हेन यू आर गोइंग टू फाइल द कॉन्टिन्यूशन एप्लीकेशन इन दैट वे द पेटेंट एप्लीकेशन यू नो दैट पेटेंट एप्लीकेशन जो है वो इश्यूड नहीं होना चाहिए, अमेंड नहीं होना चाहिए, जो है अबेंडेंट नहीं होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन कोई भी न्यू सब्जेक्ट मैटर ऐड नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। Very beautiful example with this invention for the smart water bottle that track the water intake। आपका water intake कितना है? कॉन्टिन्यूशन में उन्होंने क्या करा? कॉन्टिन्यूशन में उन्होंने फोकस कर दिया सेंसर सिस्टम। ये सेंसर सिस्टम इंफॉर्मेशन दे डिस्क्राइब इन द स्पेसिफिकेशन और समवेयर एल्स, राइट। इन दैट वे he just thought that my patent application, claim of my patent application is not very clear if I state that a smart water bottle which track water intake system, so that I need to add some point with respect to the sensor system so that I can make my claim as a smart water bottle system that track water intake using with the help of the sensor system। क्लियर? यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे प्रायोरिटी चेंज नहीं होगी, डिविजनल में भी प्रायोरिटी चेंज नहीं होगी, प्रायोरिटी सेम ही रहेगी। आपकी जो भी प्रायोरिटी काउंट होगी यहाँ पे कॉन्टिन्यूशन एप्लीकेशन में आप क्लेम को जो है नैरो या ब्रॉड कर सकते, कोई नया सब्जेक्ट मैटर ऐड नहीं होगा। बट कमिंग टू द अनदर वन, कॉन्टिन्यूशन इन पार्ट एज टर्म इटसेल्फ स्टेट। कॉन्टिन्यूशन तो है, आप उसमें ऐड तो कर रहे हो उसके क्लेम में, बट इन पार्ट कुछ नया भी आप वहां पे ऐड कर सकते हो इन दैट वे, राइट। कॉन्टिन्यूशन इन पार्ट, व्हाट इज दैट? कॉन्टिन्यूशन इन पार्ट में आप जो है कॉन्टिन्यूशन इन पार्ट, दिस इज इन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। आप कब फाइल करोगे? आप
कब फाइल करोगे? या तो आप जो है कोई न्यू मैटर, या तो आप ओल्ड इन्वेंशन का कोई पार्ट ऐड करना चाह रहे हो, या तो जो आपका पेरेंट इन्वेंशन मतलब ओरिजिनल जब आपने फाइल करा उसका कुछ पार्ट ऐड करोगे, या तो उसमें कोई न्यू न्यू इन्वेंशन का कुछ पार्ट ऐड करोगे, राइट? ऐसी सिचुएशन पे जब आप ओल्ड पेटेंट, जब उसी पेटेंट का जो है कुछ पार्ट जो है ऐड करते हो, तब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में प्रायोरिटी डेट सेम होगी। जब आप न्यू सब्जेक्ट मैटर का ऐड करते हो, ऐसी सिचुएशन में नई प्रायोरिटी डेट जो है उस न्यू सब्जेक्ट मैटर जब आपने ऐड करा उसकी उसकी जो है प्रायोरिटी डेट वो है कंसीडर करी जाएगी, राइट? These are the some important point what I would like to say here, राइट? एंड एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, दिस इज द एग्जाम्पल, स्मार्ट वाटर बॉटल, द सेम एग्जाम्पल आई टुक व्हाट आई टुक फॉर कॉन्टिन्यूशन एप्लीकेशन। कॉन्टिन्यूशन इन पार्ट एप्लीकेशन में आप जब आप फाइल कर रहे हो, आपके पास ओरिजिनल पेटेंट डॉक्यूमेंट है ए स्मार्ट वाटर बॉटल दैट ट्रैक वाटर इनटेक सिस्टम। बट आप कॉन्टिन्यूशन इन पार्ट करते टाइम क्या क्या बोलते हो? आपने एक सिस्टम ऐड करा जहां पे आपने बोला मोबाइल ऐप, राइट? एक स्मार्ट बॉटल, वो एक वाटर बॉटल है दैट ट्रैक वाटर इनटेक सिस्टम यूजिंग विद द हेल्प ऑफ द मोबाइल ऐप। So in that situation, what kind of the things is happening? The thing will be happening with respect to the old feature and new feature. This is very important. यहाँ पे continuation and continuation in part में difference देखते हैं, यहाँ पे clear होगा। कॉन्टिन्यूशन जो हमारा होता है, कॉन्टिन्यूशन एप्लीकेशन आप कब फाइल करोगे? जब ऐसी सिचुएशन पे एप्लीकेंट की चॉइस है, आपका क्लाइंट खुद आके बोलता है या आप खुद करना चाह रहे हो कि जो है आपने अपना जो है कॉन्टिन्यूशन फाइल करना है, क्योंकि आपको जो है कुछ ऐसा मैटर या न्यू क्लेम जो है आपको अपना चेंज करना है, बट वहाँ पे कोई भी नया सब्जेक्ट मैटर आप ऐड नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे जो प्रायोरिटी जो कंसीडर होगी वो आपकी प्रायोरिटी सेम कंसीडर होगी जो आपकी पेरेंट एप्लीकेशन की। सेम डिविजनल का भी ऑलमोस्ट सेम है, बट डिविजनल का एक डिफरेंस ये है कि डिविजनल आप खुद से फाइल मत करिए, आप जो है डिविजनल आप तभी फाइल करिए जब आपका एग्जामिनर कह रहा है, एग्जामिनर इज सेइंग दैट यू नीड टू फाइल फॉर द डिविजनल एप्लीकेशन, देन यू विल गो फॉर द डिविजनल एप्लीकेशन। डिविजनल एप्लीकेशन का भी एक प्लस पॉइंट ये है कि डिविजनल एप्लीकेशन में आप कोई भी जो है कोई भी मैटर ऐड नहीं करते, प्रायोरिटी सेम होगी। बट इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूशन इन पार्ट का मतलब कोई न्यू सब्जेक्ट मैटर आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे कोई न्यू क्लेम आप ऐड कर सकते हो, और जो न्यू क्लेम ऐड करोगे वो आपका जो है न्यू सब्जेक्ट मैटर, न्यू प्रायोरिटी की तरह कंसीडर होगा। क्लियर? नाउ till now we studied that we studied that divisional patent application, we studied the continuation patent application, we studied provisional patent application and complete patent application। आप किस सिचुएशन पे क्या फाइल करोगे? री इशू पेटेंट क्या होता है? री इशू पेटेंट एक ग्रांटेड पेटेंट में अगर कोई एरर है, अगर ग्रांटेड पेटेंट में कुछ एरर आप फील करते हो, ग्रांटेड पेटेंट पब्लिकेशन या एग्जामिनेशन के बारे में जब आपका पेटेंट ग्रांट हो चुका, जब फिर भी स्टिल यू फील दैट देयर इज सम एरर राइट इन द ग्रांटेड पेटेंट, इन दैट वे यू कैन गो फॉर री इशू पेटेंट। री इशू पेटेंट की कंडीशंस क्या है? री इशू पेटेंट की कंडीशंस है, जैसे कि एक एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, दैट वुड बी इजी। एक मैकेनिकल पेंसिल है, एक नॉर्मल पेंसिल है, एक मैकेनिकल पेंसिल है। उस मैकेनिकल पेंसिल में बोलता है कि मेटल केसिंग है एंड द मेटल केसिंग के साथ लेड एडवांसिंग मैकेनिज्म है, राइट? अब उसको लगा कि ये जो मैंने जो है प्लास्टिक या मेटल के बारे में मैं ऐड करता हूँ, ये मेरा क्लेम जो है क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा जो है नैरो करके दे रहा है, या जब मेरा क्लेम जो है बहुत ज़्यादा नैरो करके दे रहा है, ऐसी सिचुएशन पे उसने क्या करा, उसने जो है रीइशू पेटेंट के बारे में बात करी। उसने बोला कि मैं क्या करूँगा, मैं अपने क्लेम को थोड़ा ब्रॉड करूँगा मतलब कि सो दैट मैं आई विल फाइल अ पेटेंट विद द सम करेक्शन कि ये जो मेटल है इसको जो है अलग करके, एंड देन आई एम गोइंग टू रिवाइज माई क्लेम with that the mechanical pencil comprising a casing and a lead advancing mechanism. He dropped down the word metal from his reissue patent. The outcome is that, आउटकम क्यों करते हैं इसको ऐसे, इसका करने का मेजर रीजन ये होता है कि पेटेंट प्रोटेक्शन को ब्रॉड करना, कोई भी नया सब्जेक्ट मैटर ऐड नहीं कर सकते, और उसके बाद जो है आपका जो है कुछ करेक्शंस के लिए करा जाता है ये, राइट? अगर आपका ऑलरेडी पेटेंट ग्रांट हो चुका उस केस में। पेटेंट ऑफ एडिशन, जब हम पेटेंट सेक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, देन वी विल रीड अबाउट द पेटेंट ऑफ एडिशन। नाउ एज ऑफ नाउ यू नीड टू नो पेटेंट ऑफ एडिशन क्या होता है। पेटेंट ऑफ एडिशन कमिंग एट सेक्शन 64 इन इंडियन पेटेंट ऑफिस। क्या होता है पेटेंट ऑफ एडिशन? पेटेंट ऑफ एडिशन इज अ ग्रांटेड फॉर एन इंप्रूवमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ ऑलरेडी पेटेंटेड, राइट? आपका पेटेंट हो चुका है, उसमें आप कुछ मॉडिफिकेशन या इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हो, आप
करेक्शन के बारे में बात नहीं चल रही है, दे आर टॉकिंग अबाउट द इम्प्रूवमेंट प्रोसेसेस, राइट। दे आर टॉकिंग अबाउट द इम्प्रूवमेंट प्रोसेसेस या मॉडिफिकेशन। यहाँ पे दो चार चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। जो है यहाँ पे आपका पेटेंट ऑलरेडी जो है ग्रांट हो चुका है, देयर आर नो नो इंडिपेंडेंट एंड इट्स डिपेंड अपॉन द पेरेंट पेटेंट एप्लीकेशन। जैसे एग्जांपल से देखते हैं तो वो ज़्यादा क्लैरिटी यहाँ पे आएगी आपको। एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल में एक स्मार्टफोन है, एक स्मार्टफोन है, बैटरी विद 3000 मेगा एम्पियर की बैटरी है। पेटेंट ऑफ एडिक्शन में आपने क्या करा, इंप्रूवमेंट टू द बैटरी। आपने बोला कि एक स्मार्टफोन है, एक स्मार्टफोन विद स्मार्टफोन बैटरी विद 3000 एम्पियर फॉर फास्टर चार्जिंग, राइट। तो आपने ये इंप्रूवमेंट करा उसमें कि ये मैंने जो बैटरी बनाई, ये जो मैंने स्मार्टफोन की बैटरी बनाई, दिस बैटरी इज गोइंग टू इंप्रूव द फास्टर चार्जिंग और द लॉन्गर लाइफ के लिए। तो इस टाइप का इंप्रूवमेंट जो है, दिस विल कम अंडर पेटेंट ऑफ एडिक्शन। कन्वेंशनल दो टर्म्स होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी पेटेंट एप्लीकेशन। ऑर्डिनरी पेटेंट एप्लीकेशन क्या है? ऑर्डिनरी पेटेंट एप्लीकेशन सपोज है कि आप इंडिया में हैं, आपने कुछ इन्वेंशन करा, प्रोटोटाइप बनाया और आपने इसका एक्सपेरिमेंट सब कुछ करने के बाद यू आर गोइंग टू फाइल योर पेटेंट एप्लीकेशन इन द इंडिया, राइट, in India, so that your application will be considered as ordinary patent application. Conventional patent application क्या होगी? Conventional patent application is those patent application which filed in a country, which filed in a country claiming from earlier patent application filed in another conventional country under Paris Convention. Suppose, let's take example. That would be easy for you to understand what I'm trying to make here. अब सपोज करो कि रामू काका है, रामू काका जर्मनी में रहते थे, ठीक है। रामू काका जर्मनी में रहते, रामू काका ने एक मेडिकल डिवाइस जो है इन्वेंट करी इन जर्मनी में और उसे फाइल कर दिया 1 मार्च 2025 में। रामू काका के पास जो है जब उसे फाइल करा उन्होंने जर्मनी में, उन्होंने सोचा यार मुझे तो इंडिया जाना है, मेरा बुढ़ापा आ गया। देन ही इज ट्राइंग टू फाइल हिज पेटेंट एप्लीकेशन इन इंडिया, बट विद इन 12 month, within 12 month he is going to file his patent application in India 15th February 2026, claiming what that claiming he is going to take that, he is going to take that claiming from the German application. So in India patent application is a conventional patent application. Kyun? Because in that India patent application of the Ramu Kaka taking the priority from the Germany patent application, and that Germany is under the Paris Convention, it is coming under Paris Convention, so that the Indian patent application will not consider as a ordinary patent application. Indian patent application will be considered as the conventional patent application. So the definition itself states that the conventional patent is nothing. It is a patent application filed in a country claiming priority from Germany, from earlier patent application filed in another conventional country. क्लियर? यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, 12 मंथ पीरियड। आपको वो 12 मंथ के पीरियड के अंदर ही जो है उस कंट्री में जाना पड़ेगा। पीसीटी नेशनल फीस एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले पेटेंट कॉर्पोरेशन टेरिटरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पेटेंट कॉर्पोरेशन टेरिटरी जो है रन करी जाती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है रन करी जाती है। एंड इसके अंदर अराउंड 157 कंट्रीज जो है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स हैं इसमें। एक तो होता है पीसीटी एप्लीकेशन, राइट, एक होता है पीसीटी एप्लीकेशन, नॉर्मल पीसीटी एप्लीकेशन एज ऑर्डिनरी एप्लीकेशन, आपने इंटरनेशनल में फाइलिंग करी। आपका पीसीटी नेशनल फेज एप्लीकेशन क्या होता है? पीसीटी नेशनल फेज एप्लीकेशन में ये स्टेप्स हैं, लेट्स गो थ्रू ऑल दोज स्टेप वन बाय वन, राइट। सबसे पहले क्या है कि आपने प्रायोरिटी ली, सपोज करो कि आपने प्रायोरिटी ली, आपने जो है पहले इंडिया में फाइल करा, इंडिया में पेटेंट फाइल करा, देन यू थॉट दैट कि आई एम गोइंग टू फाइल द सेम पेटेंट एप्लीकेशन इन द अदर कंट्री, आई एम गोइंग टू स्पेंड द बिजनेस इन द अदर कंट्रीज ऑल्सो, सो दैट in that way you are going to file the PCT application. Next thing what you are going to do, that next thing you are going to file for the PCT application within 12 month, right? Within a 12 month, if you file the PCT application within a 12 month, then you will have a 30 or 31 month of period of the time from the date of the priority matlab first filing in the India, right? If you first file your patent application in India and you file your patent application in the PCT within 12 month, and then you will have a 31 month of period from the
first filing or you can say the priority date of the first that application, that 31st month of the period you will get to file or to enter into any national phase. Where what is that national phase? That national phase is nothing 157 country. Clear? सपोज लेट्स टेक एग्जांपल हियर। सपोज जो है राहुल ने राहुल वाज अ पर्सन, राइट? राहुल फर्स्ट फाइल हिज पेटेंट एप्लीकेशन इन इंडिया। ही थॉट दैट आई एम गोइंग टू एक्सपेंड सम बिजनेस इन सम अदर कंट्रीज, इन यूएस, इन ऑस्ट्रेलिया एंड मे बी सम अदर country. In that way he filed his patent application within a 12 month of period, right? 12 month of period, and all that PCT application will go for the international search report, international search report, and it will go for the international primarily examination report. All those things will going to happen. And then he thought that okay, I got a sponsor and each and everything, and he is going to enter that patent application in the national phase. ये हमने अभी तक डिफरेंट काइंड ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन पढ़े। क्या क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा जो है प्रोविजनल एप्लीकेशन कब फाइल करेंगे, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कब फाइल करेंगे, डिविजनल पेटेंट कब फाइल करेंगे, कॉन्टिन्यूशन पेटेंट एप्लीकेशन कब फाइल करेंगे, कॉन्टिन्यूशन इन पार्ट कब फाइल करेंगे, ऑर्डिनरी पेटेंट एप्लीकेशन कब फाइल करेंगे, एंड पीसीटी एप्लीकेशन कब फाइल करेंगे, पीसीटी नेशनल फेज एप्लीकेशन कब फाइल करेंगे। All those things we studied, that what kind of the situation will come and how and what point we are going to file whose kind of application, कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल के बारे में, जैसे कि डायग्राम है, यहाँ पे एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट की जो एप्लीकेशन है उसमें दो कंटेंट है, कंटेंट ए है, कंटेंट बी है, ठीक है? उसने फाइल करा और उसके बाद जो है एग्जामिनेशन में गया, एंड दैट विल गो अंडर एग्जामिनेशन प्रोसेस में गया। एग्जामिनेशन प्रोसेस में जब वो गया तब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, एग्जामिनेशन में वो जाने के बाद वहाँ पे कंट्रोल ने बोला ये तो दो invention hai, there are two invention in that patent application, you have to file for the divisional. Then he said that application B as content 1 and application jo hai C as content 2, and he thought that this application, after filing of application B, he thought that I need to do some changes here. Then he again file for the continuation application, right? Continuation application to add some new claims in the existing patent application, and then his application considering as application D. And here here what he thought that I'm going to add some other subject matter also, so that he need to file for the continuation in part application. Clear? And इसके बाद देखते हैं, we already studied a different kind of patent application. Now we are going to see what kind of the element of the patent. If agar I don't know if any one of you already saw that patent application, how that patent or granted patent look like. Granted patent or application patent having a different sections: title, abstract, field of invention, background, summary, brief description of drawing, brief description detailed description, claim, and drawing. Each and everything you can see there, right? यहाँ पे in this point, we are going to see that the patent, right? Patent, as we already saw in our previous slide, the one component is the drawing, another component is the claim. Claim also comprised of two kind of the claim: dependent claim or independent claim. Dependent and independent claim क्या होता है? Independent claim usually first claim considered as independent claim. It's mean that first claim stand alone, वो किसी पे ऊपर depend नहीं करता. That claim is not going to depend on any kind of the other claim. But in case of the dependent claim cannot stand solely. It will be depend on the independent claim only, right? We will see why I'm calling this as dependent claim, right? Other part क्या होते हैं? Title, as we already saw that, and the different dates and different number, right? We already studied that different kind of the dates. That's what I said, that those kind of the dates plays a very important role when you are dealing with the patent. Assignee or applicant is nothing. Assignee or applicant is the owner of the patent. Inventor
Inventor is a person, right? Who is inventor? Inventor is a person who invents something. But inventor can be assignee, right? But the assignee is the in charge of the patent, right? Is the owner of the patent. Suppose you are working with some of the company Sun Pharma, right? As employee, you will be considered as inventor, but you can be or cannot consider as assignee or applicant. In that case, Sun Pharma will be see as owner of the patent application. Then what the next, you can see here different kind of the classes we will learn. Different kind of the classes: abstract part and forward and backward citation. What is forward and backward citation? Forward citation, suppose you file your patent application get published, right? After publication, that other if anyone wants, if anyone also working with same kind of the invention, they will cite your patent application as a forward citation. Backward, what kind of the patent document or non patent document you cite in your patent application, right? फैमिली क्या होती है? फैमिली, व्हाट इज अबाउट द फैमिली मेंबर? फैमिली मेंबर is nothing. Suppose you file your patent application in India, and then you can file you file your patent application in US, Germany. In that case, the patent application in India, US and Germany all will club as a family member of the one patent, right? And the next point, you can see here in the patent document: field of invention, background, summary of invention, descriptions of the drawing, and detailed descriptions, right? Let's begin with the each and every segment in little bit more detail. About what is background? What is background? Background usually states the problem, right? What kind of the problem exists and how you solve that problem, right? What is your solution over the existing problem? Abstract क्या होता है? Abstract is nothing. Abstract is a abstract is almost the same kind of the things as you state in the claim part. ये एक्चुअली में क्लेम का ही रेप्लिका होता है abstract, right? ये and the summary of invention, field of invention is also directly you can relate with the independent claim part, and also contain the claim and other things. We already saw that. This is, you can see here, this is the US patent application, and I'll in the flip into another slide. It is showing in more detail about what all we studied. That as you can see, the all the sections, right? This is the patent number, this is the grant date, right? This is non-patent citations, this is patent examiner. That patent, if you will open any patent application, if you will open that this patent number US 7046230B2 in the Google patent, then after downloading the PDF of that patent document, you can see the first page of this, and you can see the title, you can see the inventor, assignee, applicant, and detailed descriptions, IPC, CPC, and background and patent citations. If I'll go to the second page, or if you will flip the second page, then you can see the field of invention, what we already saw, that how that is a background of the patent document. And next is about the how that summary is written here, right? The detailed descriptions is written here, and the detailed description of invention is written here. So all those things. And this is the India patent, how that India patent look like. Next is about the type of claim. As we already studied that two type of the claims you can see here. First type of the claim is called independent claim and dependent claim, right? I'll show you some examples so that you can understand what I was talking about, the dependent claim and independent claim. On the other side, you can see the various type of claims, various type of the claim. When we will start our drafting part, right, then we will learn each and everything in very detail. As of now, you just need to know, right? You just need to know the various type of the claim: Jepson claim, Marcus claim, processes by product claim, product by process claim, structure versus method claim, operators and machine claim, article of manufacturing claim, mean by function claim, and omnibus claim, right? Those kind of the different claim, each and every claim, how we have to write each those kind of the claim. When we start our drafting part, then we will look into that. This is a wonderful slide to understand about dependent independent claim, right? This is the first claim, right? This is the first claim is independent claim. What that first claim states about: an operators comprising pencil,
and eraser attached to the pencil, and a flip and a clip, and characterize in that light is attached to the pencil. This is just nothing. It is a operators where a pencil and eraser is attached to the pencil, and a clip also, and characterize in that light is attached to the pencil. Now this is second and third claim are called as dependent claim. Why? Because this the operator according to, right, according to all second claim talks about, right, dependency of the claim 1. According to claim 1 characterize in that the light, what that light states here, right, the light emitted is green color, right? So the dependent claim is nothing, it is an extension of the independent claim, right? If we will talk about this one, so the operators of according to claim 2, right, this is called multiple dependency. Then this claim, this independent claim depend upon first independent claim, and the second, the third dependent claim depend on second independent claim. Characterize in that the light, right, what light, not this light, this light they are talking about emit polka dotted red. Understood? Then this is all about till now. And till now we studied basics of IPR, various type of IPR, various dates playing very important role in IPR, and in what situation, what condition you need to file for which kind of the application, and basic structure of the patent, and dependent and independent claim we studied for. Thank you so much. So now, and hopefully everyone will be great here, and we will come up with some new lectures regarding this. Thank you so much.